ODI World Cup 2023 is over, but the chitter chatter around the best ODI captain isn't over yet. Everybody's talking about Pat Cummins because the way he led his team, the Australian team, to the sixth World Cup title. I mean, sixth World Cup title is a big number, बंसल, क्योंकि हम ODI वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि 10 एडिशंस में जो पिछले 10 एडिशंस हुए हैं ODI वर्ल्ड कप में, उसमें से 6 तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं और कुछ तो बात है ऑस्ट्रेलिया टीम में। लेकिन इस बार कुछ एक और स्पेशल चीज हुई। वो स्पेशल चीज ये है कि पैट कमिंस एक फास्ट बॉलर है और जनरली क्रिकेट में ये देखा जाता है और कहा जाता है, इट्स अ सेइंग, आई मीन वी डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट, बट इट्स अ सेइंग कि जो बॉलर्स हैं, हाँ, और जो बॉलर्स हैं वो इतने खास अच्छे कैप्टन्स नहीं बनते हैं। दो जो भारत को सबसे पहला वर्ल्ड कप दिलाया था वो कपिल देव ने दिलाया था, वो एक फास्ट बॉलर थे बिल्कुल, और 1992 में पाकिस्तान को इमरान खान ने दिलाया था, अगेन अ फास्ट बॉलर। सो फास्ट बॉलर्स ने काफी अच्छा किया है। लेकिन बंसर, आप मुझे ये बताइए, पैट कमिंस, कपिल देव, इमरान खान, इन सब में से आपको सबसे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया है आज तक, क्यों किया है? आई नो मैं बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर अब तक की बात कर रही हूँ, बहुत लंबा वो है कंपैरिजन का, बट स्टिल see, what I think is it's very difficult and very unfair to compare these three players or these three captains. They have all been at a very good position in their time, and these times have been completely different. कपिल देव जब कैप्टन थे, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता इंडिया को 1983, तब इंडिया में क्रिकेट का इतना कुछ क्रेज नहीं था, ना इतना उसको फॉलो किया जाता था, ना ही प्लेयर्स में इतना वो था, मतलब इतना सीरियसली, इतना प्रोफेशनली लेने का वो नहीं था, उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं था। हम लोग तभी थे भी नहीं, तो हमें पता भी नहीं कि क्या था। So it's very difficult to compare someone from 1983 with someone in 2023 now. एंड जब इमरान खान भी कैप्टन थे 1992 में, जब पाकिस्तान जीता, तब क्रिकेट वाज ऑन अ ग्रोइंग स्टेज, डेफिनेटली इन पाकिस्तान, इन द एंटायर वर्ल्ड ओवरऑल। बट तब भी अगर देखा जाए, वी हैव हर्ड अ लॉट मेनी स्टोरीज अबाउट इमरान खान, एंड जिस तरह से वो टीम को लीड करते थे, पाकिस्तान टीम को लीड करते थे, पाकिस्तान जैसी टीम को जिधर हम आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सीज हो रही है टीम के अंदर, हाँ एग्जैक्टली, टीम के अंदर भी थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम एवरीवन हैड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान, एक नेक्स्ट लेवल का रिस्पेक्ट था। लाइक आई वाज हियरिंग सम शो रिसेंटली एंड देयर वाज अ स्टोरी दैट many years after this guys had retired, Wasim Akram obviously started his career under Imran Khan, and majority of part उनके अंदर ही डेवलप हुए। तो काफ़ी सालों के बाद, रिटायर होने के बाद भी, जब इमरान खान ने उसको फ़ोन किया वसीम अकरम को, he was like yes skipper, like he was that alert. So that was the aura that men had. So उनको अभी के कैप्टन के साथ कंपेयर करना, I don't think it's much fair. Yeah, actually, it's not a fair game for any one of them. You know what Kapil Dev achieved, it was a victory in its own. I mean, obviously, World Cup title के अलावा भी वो सभी क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। किसी ने नहीं सोचा था उस समय कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, और वो समय वो था जहाँ पर वेस्ट इंडीज जैसी टीम का बोलबाला था क्रिकेट में। 92 में भी, जैसे बंसल ने बताया कि क्रिकेट काफी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस टाइम पे भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा था दैट इट कॉट एवरीबॉडीज अटेंशन, इट वाज ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट इट वाज स्टिल इवॉल्विंग। बट राइट नाउ इन 2023, each and every person out there whosoever has followed cricket, at some level or the other, as a fan or as a player, or as a cricket team supporter, or as any fanboy or a fangirl, they were all waiting to know the winners of ODI World Cup 2023. Well, India played really well in the entire tournament, but it didn't turn out well for them. It was Pat Cummins who led the team to a victory line. You know what makes Pat Cummins special is that he is a fantastic fast bowler, obviously. लेकिन बंसल, हम चलते हैं मुंबई की वो गेम में, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली सबको ग्लेन मैक्सवेल याद है, बट पैट कमिंस ने जो करके दिखाया, it's something really exceptional and incredible. He played test innings kind of game in that ODI game, and that's how Australia won that match. Pat Cummins ने हर बार वो दिखाया how intelligent he is. फाइनल मैच में आप बता पाएंगे कि अहमदाबाद में कंडीशंस को लेकर कितनी चर्चा हुई।
मुझे इतना पता है कि at the end of the day, Pat Cummins was the person who read the conditions well and he led his team to that title. True, undoubtedly. And to elect to bowl first in the World Cup final in such a pressurizing situation. Generally, we keep hearing people saying, experts saying that it's always good to bat first, put a total on the board and then defend it. It gets easier to defend rather than chasing. But इतना confidence होना खुद पे और खुद की team पे कि we can restrict the opposition for a lower score and then we can chase whatever the target may be. So that was something unbelievable. It was also termed as one of the bravest decisions by many people, by many experts as such. But what is more interesting and what makes Cummins a better person as a leader is something that he said before the match, that it will be good to shut the crowd, to silence the one leg strong crowd at the Narendra Modi Stadium, and he actually made it possible. Like जब विराट कोहली का विकेट लिया, और अगेन विराट कोहली का विकेट उन्होंने ही लिया, not anyone else. So again the captain leading from the front. So जब वो विकेट लिया तब I think not only the crowd but जो लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे मैच, सब everyone was shut down. Exactly. So that is something कि वो उन्होंने बोला वो करके भी दिखाया. And that tells us about how Pat Cummins is as a captain, as a player, and every time whenever he comes to address the press and media, he comes up with some jokes and he comes up with some very different kind of replies. You know, बंसल ने बहुत अच्छे से mention किया कि कैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया था, it will be good to see that 1 lakh plus crowd silent in that big stadium. So एक वो चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि वो ऑफ फील्ड भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर बोलने से हिचकते नहीं हैं, और वो हमेशा अपना ओपिनियन अप फ्रंट रखते हैं, बी इट अबाउट क्लाइमेट चेंज, बी इट अबाउट एनी अदर टीम. ही हैज टॉक्ड अबाउट बेन स्टोक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स. ही हैज टॉक्ड अबाउट द इंग्लिश टीम अ लॉट ऑफ टाइम्स. इवन इन दिस वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनसे पूछा गया था परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इट्स सरप्राइजिंग टू सी हाउ दे आर प्लेइंग, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड देम टू प्ले वेल बट द वे दे आर प्लेइंग इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग. So Pat Cummins is that player. Actually, and एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब उन्होंने उनकी टीम को सपोर्ट किया था when there were some talks in the town that they are not happy with Justin Langer, they wanted some other coach. तब काफी सीनियर प्लेयर्स ने, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने काफी बोला था ये चीज कि this is not a good thing to do, but then Pat Cummins again came out in the press and defended his team that there are certain things, we are not saying that Justin Langer is not a good coach, but there are things that we are not comfortable around, or something on those lines. So again he went out and defended his team. So all those things make him a very good captain. Absolutely, he is a fantastic captain. He's a fast bowler, and bowlers can be great captains. Examples are in front of you. Kapil Dev is one. He made India won that first World Cup. It will be obviously iconic for each one of us. Imran Khan in 1992, and there are so many other captains who have achieved really well in their lives, in their cricketing careers. But any comparison among these three, it won't be fair. All of these captains did their job well, and Bansal ने बिल्कुल ठीक कहा कि they won the match before the match. So Pat Cummins made a comment. Kapil Dev ने भी कहा था कि अब हम we are here to win the World Cup. तो ये जो कमेंट्स होते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस होता है और एक भरोसा होता है, that makes such captains stand out of the crowd, and that's how Pat Cummins is Pat Cummins today, and all the other fast bowler captains. So that's all for today, and for more such videos, you stay tuned to CricketNext.